Hello students, let's continue with the GST chapter from Concise. Today we will complete exercise 1B, after which this chapter will be done. So now this 1B exercise is also easy. There's just one thing which will come new in this exercise, and that is what is input tax and what is output tax. Something which we did not study in Frank, something which is exclusive to Concise. So we must know what these mean. Before that, I'll just give you a quick review, a quick revision that if the transaction is within a state, it is called as intrastate. Correct? And if it is intrastate, you have to find SGST and CGST. If it is between two states, then it is called as interstate, and you have to find IGST. Okay, this should be crystal clear in your mind. There should be no ambiguity, no confusion here. So based on this, now what is input tax and output tax, I'll tell you in the course of time. When the sum comes, I'll automatically make you understand what it is, and it is very easy. Okay, and as the name suggests, it is very easy. So let's start with the exercise. Question number 1. The first question is like filling the blanks, very simple question. I suggest you must pause the video and try the sum on your own. I'm just doing it for the sake of completion, but it is a very simple sum. When the goods and services are sold for rupees 15,000, so 15,000 under an intrastate transaction, so this is intrastate transaction, from station A to station B. So station A to station B, goods worth rupees 15,000 are sold. Okay, the rate of GST is 12%. What do we have to find? The selling price at station A. The selling price at station A. So A is selling the goods at 15,000. So this is a very simple basic. See, this first question is the very basic question. Okay, so selling price at station A is 15,000. Then we have to find, sorry, this is A, B, CGST and SGST. Okay, so GST rate is 12%. So I'll find 6% CGST, 6% SGST on this amount. Okay, so SGST is 6% of 15,000. Right, that is 900, and CGST is also 6% of 15,000, and that is again 900. You know that SGST and CGST are same. Then CP at station B. Now the person at station B, when he will buy this goods, worth rupees 15,000, he will pay the money 15,000 plus the tax on it. Okay, the cost price at station B. Whenever you buy something, you have to pay GST with it. Okay, so the price paid, cost price at station B means the price paid by B. Okay, and that is 15,000 plus 12% GST on 15,000. Whenever you buy something from anywhere, you have to pay the price plus the GST. So that GST is 12% of 15,000. Okay, and this answer will be 1,800. When you add this, you will get answer as 16,800.
the D part. Now they have said if the profit is 5,000, selling price at station B. So if the profit of B is 5,000, if the profit of B is 5,000, see, B bought the article for rupees 15,000 plus tax and he sold at 5,000 profit, means he will sell it at 20,000. Okay, so they are asking you to find the profit of B is 5,000. So what will be the selling price by B? It will be 20,000. So selling price of B is 20,000. Now behind the textbook they have given you the answer as 21,800 something. Okay, which is wrong. This cannot be the answer. They have made a mistake there, printing mistake. They have added 5,000 to this value. You never add the 5,000 to this value because this is the including tax amount. Okay, you always add the profit on this. So 15,000 plus 5,000 is 20,000. He will sell at 20,000. So behind the textbook the answer is wrong. The answer is 20,000. Next. Now they have added a condition that the same goods and services under an interstate transaction from B to C at a rate of 12%. So they are saying that B has sold this article to C under an interstate transaction. Okay, B has sold it to C. So what will be the GST? They are asking you to find the GST. So GST by C. So how much GST will C pay? This is question number E. So GST by C will be 12% of 20,000. This answer will be 2,400. Okay, and what will be the CP at station C? So C will buy the goods at 20,000 plus tax. Okay, so that is 20,000 plus 12% of 20,000. That will be 20,000 plus 2,400. This will be your answer. These three answers, D, E and F, behind the textbook they are different. So these will be the correct answers. Okay, next question. Now you have word problems. Goods and services are sold from Agra to Kanpur for 20,000 and then from Kanpur to Jaipur. So they are sold from Agra to Kanpur for rupees 20,000 and then from Kanpur to Jaipur. If the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur is 5,000. So profit made at Kanpur is 5,000. That means Kanpur will sell the goods at 25,000. Okay. The first question. It says find the net GST payable by the dealer at Kanpur. So you have to find the GST by the dealer at Kanpur. Now Kanpur
The dealer at Kanpur is the middleman, you can see. So he will pay the GST. So the net GST which he will pay will be on his profit, because middlemen always pay the GST on their profit. Okay, so GST by dealer in Kanpur will be 18% of the profit, that is 18% of 5,000, that is 900. Okay, put the rupees sign also. Second, the cost of goods and services at Jaipur. What will be the cost of goods and services at Jaipur? The cost will be 25,000. Whoever is buying the goods and services at Jaipur will pay 25,000 plus the tax. Whenever you have to find the price paid, that is the cost price, you have to must add the tax also. So the cost of goods and services at Jaipur is 25,000 plus 18% of 25,000. That is, when you calculate the amount, you will get the answer as 29,500. Very simple sums. In the concise, only the last 3-4 sums are the ones where you will have to actually think something, but these sums are very simple. Okay. Third sum, goods and services are sold from Kota to Mumbai. So from Kota they are sold to Mumbai for rupees 20,000, and then from Mumbai to Pune. If the rate of GST is 12% and the profit made at Mumbai is 5,000. So profit made at Mumbai is 5,000. That means from Mumbai it is sold at 25,000. Okay. Find the net GST paid at Pune if the dealer is at Pune, is the end user. This is the extra information. They are saying what will be the GST paid at Pune. So Pune is buying the goods and service at 25,000. So the Pune person will pay the GST on 25,000. So GST paid at Pune will be 12% of 25,000. This will amount to 3,000. That's it. Very small sum. Question number 4. A dealer in Banaras, UP. You can pause the video and copy the sum. I've always told you. A dealer in Banaras. So there is a dealer in Banaras. He supplies goods and services worth 8,000 to a dealer B in Agra. So there is, a dealer A in Banaras sells it to dealer B in Agra. Then dealer B supplies the same goods and services to dealer C in Patna. But wait, here the dealer A supplies goods worth rupees 8,000. Okay. And supplies the same goods and services to dealer C in Patna at a profit of 1,200. So dealer B makes a profit of 1,200. That means he is selling the goods
at rupees 9,200. Correct? 1200 profit means 9,200. Now what do we have to find? Yes, so here you have to find the input and output taxes for dealer C. You have to find the input and output tax of dealer C. Now what is input and output tax? Very simple, very easy. See, input tax means जितने पैसे में आप खरीद रहे हो उस पे आप टैक्स क्या पे कर रहे हो, एंड आउटपुट टैक्स मीन्स जितने में आप बेच रहे हो उस पे क्या टैक्स पे कर रहे हो. ओके, द रेट ऑफ जीएसटी फॉर दिस सम इज 18%. ओके, सो किसका इनपुट टैक्स पूछा है? इनपुट एंड आउटपुट टैक्स ऑफ सी पूछा है. ठीक है, तो सी ने कितने में लिया है? 9200 में. सो 18% ऑफ 9200 इज द इनपुट टैक्स. वेरी सिंपल, इनपुट टैक्स नाम ही बताता है. इनपुट मतलब कितने में लिया, उस पे टैक्स. ओके, सो इनपुट टैक्स फॉर सी इज 18% ऑफ 9200. That will amount to 1656. Okay, then output tax for C. अब C ने कितने में बेचा? बट C ने तो बेचा ही नहीं है. आर्टिकल देखो, आगे का कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. C ने बेचा ही नहीं है. अगर बेचा ही नहीं है तो देयर विल बी नो टैक्स फॉर C, नो आउटपुट टैक्स. सो आउटपुट टैक्स इज 0 because he did not sell. If he would have sold, or if he would have sold these goods and services at, let's say, 10,000 rupees, so output tax उसका 10,000 में कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, बट है ही नहीं, तो we cannot calculate. Next, very small sums and very simple sums are there in concise textbook. A is a dealer in Meerut. He supplies the goods and services. A supplies the goods and services to B for rupees 15,000. B supplies the goods and services to C at a profit of 3,000. So B makes a profit of 3,000. That means B sells it for rupees 18,000. Okay, you can even show this calculation here, that SP of B is 15,000 plus 3,000, that is 18,000. You can show this calculation. Okay, now the tax is 18%, the GST rate is 18%. Always remember, GST rates have only 4 types of percentage. It can be 5, 12, 18 or 28. These are the 4 slabs of GST. The rate will be one of these 4. It cannot be different. It cannot be 10%. So now the first part, what they want us to find out, the cost of goods and services to dealer C in Jabalpur. The cost of goods and services for dealer C in Jabalpur. So ये जो C dealer है, इसने कितने में goods and services को खरीदा? Okay, कितने में इसने goods and services को buy किया है? So what basically they are asking you the price paid by C. Okay, C ने कितने में खरीदा? So the cost of goods and services by C will be, I'll just get it here, 18,000 plus 18% of 18,000. Correct? जब C पैसे देगा goods and services का, तो he will pay 18,000 plus tax on it. That is 18,000. Okay, so this value, when you will calculate this, it will amount to 21,240 rupees. Second,
द नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी. सो डीलर बी कितना टैक्स पे करेगा? नाउ यू नो दैट डीलर बी इज अ मिडिलमैन. डीलर बी इज अ middleman. So I have told you the tax paid by dealer B will be 18% of the profit he has made. ठीक है. सो जब भी अगर टैक्स पूछते हैं, किसी भी मिडिलमैन का टैक्स पूछते हैं, तो यू हैव टू फाइंड ऑन प्रॉफिट. ओके. इफ दे आस्क यू लाइक दिस कि डीलर बी ने कितने में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, ठीक है, दैट विल बी 15,000 प्लस 18% ऑफ 15,000. ओके, दैट इज डिफरेंट. यहाँ पे सिर्फ पूछा है डीलर बी ने टैक्स कितना पे किया है, तो वो डीलर बी बिकॉज एक मिडिल मैन है, तो ही विल पे द टैक्स ओनली ऑन हिज प्रॉफिट, नेट टैक्स. सो ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000. वी नो दैट he made a profit of 3,000. So he will pay the tax on this 3,000 amount only, and that will be 540. Next, read question number 6. It's a very simple question. You can do it on your own also. See, the question says, those of you who have understood can pause the video and try the sum on your own. A dealer X in Hapur supplies goods and services worth 50,000 to some other dealer Y in the same city. Now the dealer Y supplies the same goods and services to dealer Z at a profit of 20,000. So dealer Y makes a profit of 20,000. That means he is selling it at 70,000 rupees. Okay, you can just write it. SP of Y is 50,000 plus 20,000. That is 70,000. Now what do we have to find? We have to find the input and output tax of dealer Y. So मैंने बताया था आपको what is input tax. Input tax means जितने में खरीदा उस पे tax. Okay. And what is the rate of GST for this question? It is 28%. It is given at the end of the question. It is 28%. So we have to find 28% of कितने में खरीदा? 50,000. Okay. And what will be the output tax? 28% of कितने में बेचा? 70,000. This is your first part of the answer. Okay. And second part. Second part is the net GST payable by Y. So net GST Y ने कितना पे किया? Net GST paid by Y will be the GST on his profit. Okay. So GST by Y is 28% of his profit. That is 28% of 20,000. So do these calculations, find these three values. You will get this answer as 14,000 and this answer as 19,600, and this answer on profit will be 5,600. And if I show you something, one extra point here for extra knowledge, that if you see Y ने कितना इनपुट टैक्स पे किया? 14,000. मीन्स जब Y ने ये खरीदा तो Y ने Z को कितना इनपुट टैक्स दिया? 14,000.
फिर y ने x को कितना इनपुट टैक्स दिया 14,000। फिर जब y ने z को बेचा तो उसने आउटपुट टैक्स कितना लिया 19,000, y से लिया 19,000 और x को दिया 14,000। तो इसका डिफरेंस क्या होता है? इसका डिफरेंस होता है 5,600 जो एक्स्ट्रा टैक्स मिला y को। ओके, इनपुट टैक्स क्या होता है? जो जब y ने बिल पे किया x को तो ही गेव दिस मच टैक्स अलॉन्ग विद दिस मनी, एंड जब y ने z को बेचा तो z उसे पैसे देगा y को, तो उसने कितना पैसे दिया 70,000 प्लस दिस अमाउंट। ओके, सो y ने टैक्स पे किया 14,000, y को टैक्स मिला 19,600, दैट मीन्स उसे एक्स्ट्रा टैक्स मिला। दैट एक्स्ट्रा टैक्स इज 5,600 विच इज द टैक्स ही विल पे टू द गवर्नमेंट। ओके, सो वो होता है 5,600 जो हम डायरेक्टली प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम हमेशा करते हैं। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमें मिलता है प्रॉफिट पे टैक्स 5,600, ओके, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द टू टैक्स, विच वन ही पेज एंड वन ही कलेक्ट्स। उसका जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज द अमाउंट ही गिव्स इट टू द गवर्नमेंट। ओके, सो कंफ्यूज मत होना कि ये 14,000 उसने गवर्नमेंट को दिया, ये 19,000 गवर्नमेंट को दिया, नहीं। दिस 14,000 14,000 एक्स को दिया है और 19,000 जेड से लिया है, ठीक है। जो डिफरेंस एक्स्ट्रा अमाउंट जो इसको मिलता है टैक्स का, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज गिवन टू द गवर्नमेंट, दैट इज द GST पेड बाय वाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ डीलर हियर, यू आर सिटिंग हियर, ठीक है। आप जब चीज़ खरीदोगे, समझो आपने एक मोबाइल खरीदा एक्स के पास से, ठीक है, तो आप एक्स को 50,000 रुपीज़ दोगे और प्लस उसे टैक्स भी दोगे 14,000 का। ओके, अब आप जब वो मोबाइल फ़ोन कस्टमर को बेचोगे तो कस्टमर विल पे यू 70,000 बिकॉज आपने उसकी प्राइस बढ़ा दी है, ठीक है, और कस्टमर 70,000 पे आपको टैक्स देगा, दैट विल बी 19,600। ओके, सो आपने 20,000 का प्रॉफिट तो किया, प्लस आपको टैक्स भी एक्स्ट्रा मिला, तो टैक्स एक्स्ट्रा आप रख नहीं सकते, दैट एक्स्ट्रा टैक्स यू हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट। ओके, ये है GST का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बट आप रूल्स फॉलो करो अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी, व्हाट इज इनपुट टैक्स, व्हाट इज आउटपुट टैक्स, व्हाट इज GST बाय मिडिलमैन। ओके, रूल्स फॉलो करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। सेवेंथ इज ऑल्सो वेरी सिंपल। Consultancy services worth 50,000 are transferred from Delhi to Calcutta worth 50,000 at a rate of 18% GST, and then from Calcutta to Nainital at a profit of 20,000. That means Calcutta to Nainital 70,000 में गया, okay, at the same rate of GST 18%. Now what do we have to find? Find the output tax at, आउटपुट टैक्स ढूंढना है सबका, दिल्ली पे भी, कैलकाटा पे भी एंड नैनीताल पे भी। ओके, तीनों का आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना है। सो दिल्ली ने कितने में बेचा 50,000 में, सो आउटपुट टैक्स एट दिल्ली विल बी 18% ऑफ 50,000. Then the output tax at Calcutta will be 18% of, कैलकाता ने कितने में बेचा, कैलकाटा ने 70,000 में बेचा। ओके, एंड द थर्ड वन आउटपुट टैक्स एट नैनीताल, नैनीताल में कितने में बेचा है, नैनीताल ने कितने में बेचा है, बेचा ही नहीं नैनीताल ने, अगर बेचा ही नहीं तो देयर विल बी नो आउटपुट टैक्स, सो आउटपुट टैक्स एट नैनीताल विल बी 0. ओके, सो दिस वैल्यू यू हैव टू फाइंड, व्हाट इज द 18% ऑफ 50,000, this will be 9,000 actually, sorry, and what is the 18% of 70,000, that will be 12,600. Question number 8.
Now we have done these type of questions in Frank also. Let's understand. A dealer A, the list price of an article is 9,000. So list price matlab mark price, okay, is 9,000. A dealer A sells it to dealer B at some lower price. मतलब dealer A ने dealer B को sell किया, कितने price पे sell किया वो बताया नहीं. They have told some lower price. ठीक है, तो let's say dealer A sold at X. I'll just write it. Dealer A sold at X. Now further, dealer B sells the same article to the customer at, dealer B sells it to the customer at list price. So dealer B ने list price पे sell किया, that is 9,000. If the rate of GST is 18% and dealer B paid a tax under GST equal to 324. So dealer B ने 324 rupees का tax pay किया. Means tax already दे दिया है, GST already दे दिया है. Okay. So what do we have to find? The amount inclusive of GST paid by dealer B. डीलर बी ने कितना अमाउंट पे किया इंक्लूडिंग जीएसटी. तो हमने ये टाइप के सम्स किए हैं. दैट वी नो दैट जीएसटी बाय बी विल बी 18% ऑफ हिज प्रॉफिट बिकॉज डीलर बी इज अ मिडलमैन. ओके, डीलर बी को कितना जीएसटी मिला? 324. एंड डीलर बी ने प्रॉफिट कितना किया? ही बॉट द आर्टिकल एट एक्स एंड सोल्ड इट एट 9,000. सो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट क्या होगा? 9,000 माइनस एक्स. ओके, यू कैन राइट इट हियर इफ यू वांट. प्रॉफिट ऑफ बी विल बी 9,000 माइनस एक्स. जितने में खरीदा और कितने में बेचा उनका डिफरेंस. सो दिस इज 9,000 माइनस एक्स. नाउ वी हैव टू डू दिस कैलकुलेशन. सो 32400 अपॉन 18. 18 ones are 18s are. So 1800 equals to 9,000 minus x. So x is 9,000 minus 18. That is 7,200. Okay, सम एंड मत करना, अभी तक हमें x मिला है, बट वी हैव टू फाइंड इंक्लूडिंग टैक्स बी ने कितना पैसा पे किया. ठीक है, तो अमाउंट पेड बाय बी इंक्लूसिव टैक्स. सो बी जब पैसे पे करेगा तो ही विल पे x प्लस 18%. सो ही विल पे 72,000 प्लस 18% ऑफ 72,000. Correct? So this will amount to 8,496. That's it for the 8th sum. Next, question number 9. Mark price of an article is 6,000. So the mark price is 6,000. A wholesaler sells it to the dealer at 20% discount.
सो होलसेलर सेल्स इट टू द डीलर एट 20% डिस्काउंट. देन शायद आगे डीलर के बाद देयर इज कस्टमर ऑल्सो. ओके, सो होलसेलर सेल्स इट टू द डीलर एट 20% डिस्काउंट मीन्स SP ऑफ होलसेलर फाइंड करते हैं ना अच्छे से. होलसेलर ने 20% डिस्काउंट पे सेल किया. 20% डिस्काउंट मीन्स वी हैव टू फाइंड 80% ऑफ मार्क प्राइस. ओके, सो आई विल फाइंड 80% ऑफ 6,000. 8 6 are 48. सो आंसर इज 4800. होलसेलर ने कितने में सेल किया? 4800. ओके, द डीलर फर्दर सेल्स एन आर्टिकल टू द कस्टमर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस. डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है. डिस्काउंट इस पे मत कर देना. ये जो डी है, डीलर है, इसने डिस्काउंट दिया है 10% का, बट इस पे नहीं. ये ऑलवेज गिव डिस्काउंट्स ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है. सो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट. सो SP ऑफ डीलर विल बी 10% डिस्काउंट करना मतलब 90% फाइंड करना. ओके, सो 90% ऑफ 6,000. सो दिस विल बी 5,400. सो डीलर ने सेल किया 5,400 पे. ओके, if the rate of GST at each stage is 18%, find the amount of tax paid by the dealer to the government. So dealer ने कितना टैक्स पे किया? Dealer is a middleman. Okay, dealer is a middleman. So how much profit did dealer made? Dealer ने कितना प्रॉफिट किया है? 5,400 minus 4,800. ओके, दैट इज 600 का प्रॉफिट किया है डीलर ने. सी, सो ही विल पे द टैक्स ऑन हिज प्रॉफिट. आई जस्ट डू इट हियर. Dealer is 18% of his profit, that is 600, and that value is 18 6 108. Your answer is 108. Next, the last two sums are very interesting. A manufacturer of a TV set in Delhi, he manufactures a particular brand of TV and marks it at rupees 75,000. So the mark price is 75,000. He sells his TV set to a wholesaler B in Punjab. So A ने B को सेल किया, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%. सो A ने B को मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट दिया है. सो व्हाट विल बी द SP ऑफ A? इट विल बी 30% डिस्काउंट. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द 70% ऑफ 75,000. दिस विल अमाउंट टू 52,500. So SP of A ने कितने में बेचा? 52,500. This making this flow chart is very important. Then we have to read it carefully. The wholesaler B raises the mark price of the TV set by 30%. अब B के पास TV सेट आया, ठीक है, देखो ये B के दुकान में TV सेट आया और TV सेट पे मार्क प्राइस कितनी थी? 75,000. ओके, in the question they are saying that the wholesaler B raises the mark price by 30%. मतलब उसने क्या किया? ये मार्क प्राइस का स्टिकर हटा दिया और 30% बढ़ा के एक न्यू मार्क प्राइस ऐड कर दी. ओके, सो
न्यू मार्क प्राइस इज 30% इंक्रीज किया है किसको 75,000 को. सो 75,000 प्लस 30% ऑफ 75,000. करेक्ट. 75,000 जो मार्क प्राइस थी उसे 30% इंक्रीज किया है. इस मार्क प्राइस को 30% इंक्रीज किया है. सो दैट विल बी what is 75 into 3? We will add this value to 75,000. You will get the answer as 95,500. This is the new mark price. Okay. एंड आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, द होलसेलर बी रेजेस द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी सेट बाय 30% एंड सेल्स इट टू डीलर सी इन दिल्ली. सो उसने इस प्राइस में डीलर सी को बेच दिया. कितने प्राइस में बेचा? 97,500 में डीलर सी को बेच दिया. बहुत प्रॉफिट कर लिया उसने. ओके. अब पूछा है, क्या पूछा है? इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, फाइंड द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट. ओके. सो होलसेलर मतलब ये था बी. B was the wholesaler. So अब B ने कितना प्रॉफिट किया है? You can see. So the profit by B is 97,500 में सेल किया है and 52,500 में बाय किया था. That means he made a profit of 45,000. ओके. 45,000 का प्रॉफिट किया है. नाउ जीएसटी बाय होलसेलर. होलसेलर इज अ मिडल मैन, सो ही विल पे द जीएसटी दैट इज 5% रेट ऑन द प्रॉफिट ही मेड. ओके. सो दैट विल बी 450 into 5. So, कितना प्रॉफिट किया? 2,250 रुपीज. ओके. जस्ट पॉज द वीडियो, कॉपी द सम. Question number 11. The last sum of the exercise. This type of sum also we have done in Frank. ये रिडक्शन वाला सम है, रिड्यूस्ड प्राइस. लास्ट में हमने 2-3 सम्स किए थे इन फ्रैंक. दे वर बेस्ड ऑन दिस टाइप. सो फॉर अ ट्रेडर द मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 15,680 exclusive of GST. So mark price is given as 15,680 exclusive of GST. exclusive of GST मतलब GST इंक्लूडेड नहीं है. तो GST कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता है मार्क प्राइस में. अगर होगा तो आपको मार्क प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है. मार्क प्राइस इज नेवर इंक्लूसिव ऑफ GST. कोई भी प्राइस इंक्लूसिव ऑफ GST नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अगर इफ दे हैव गिवन यू इंक्लूसिव ऑफ GST then you first find the price without GST. Okay, so this is the mark price in the question. GST is 12%. Okay, so अगर मैं ये रेफ्रिजरेटर खरीदने जाऊंगा, if I want to purchase this refrigerator from the trader, then I will have to pay 15,680 plus 12% GST on it. Correct? This is what I have to do. Okay, तो ये अमाउंट कुछ 16,000 या 17,000 हो जाएगा. Okay, but Gagan, a customer, a smart customer, comes to the trader and says that I won't pay this much money. Okay, reduce the mark price for me. Reduce the mark price to such a level that, let's say the reduced mark price is X. I'll just write here. Let the reduced mark price be X. So what is Gagan saying? That price को इतना reduce करो, means price को X बनाओ, so that इस X पे when I pay 12% GST, okay, the total price including the GST becomes 15,680. गगन क्या कह रहा है कि अगर मैं ये प्राइस मार्क प्राइस पे करूंगा तो मुझे प्लस इस पे GST पे करना पड़ेगा 1,000-2,000 रुपया, तो टोटल मेरा कॉस्ट 16,000-17,000 हो जाएगा.
ही सेइंग नो आई वोंट पे दिस मच, मैं टोटल पैसा इतना पे करूंगा जीएसटी वगैरह सब मिला के, तो मेरे लिए मार्क प्राइस कम करो. ठीक है, तो कितना कम करो, तो लेट द रिड्यूस मार्क प्राइस बी एक्स. ओके, सो let the reduced mark price be x. Now what we will do, what is Gagan saying, that I will pay this reduced price plus 12% on this reduced price, because GST तो पे करना ही पड़ेगा, without GST तो काम नहीं चलेगा. So x plus 12% of x, and that total should be 15,680. Okay, so he's saying that his price including the tax must be 15,680. So I'll write one statement here extra. Gagan wants 15,680 to be price including tax. Take the LCM here. Cross multiply. When you solve this, you will get the value of x as 14,000. But this is not the final answer. This was the price. What was x? X was the reduced mark price. Okay, so the customer wanted the trader to reduce the mark price to 14,000. So what they actually want is, what was the required reduction? How much was the mark price reduced? How much was it reduced? The mark price was 15,680 and it was brought down to 14,000. Okay, so what was the reduction? Reduction was 1,680 rupees. Understood? It was 1,680 rupees. This is your answer. With this, we complete GST chapter. You can practice the solved examples.